Okay guys, let's move forward with another video जहाँ हम देखेंगे what is the use of the Docker Hub. So basically आपने as a Git देखा होगा कि how the Git repositories and all work. So like what is the use of Git? Like if you want to push your code and you make use of like the CI/CD and the deployment, then you just push that data in the main repository. So आपका जो भी सारा का सारा डाटा होगा as a सेंट्रलाइज्ड एक रिपोजिटरी में सेफली प्रेजेंट रहेगा. सो बिल्कुल सिमिलर डॉकर हब है, बट द डॉकर हब इज फॉर द इमेजेस, राइट. अगर मेरे को कोई भी एक इमेज क्रिएट करनी है, मैं बिल्ड करके क्रिएट करूंगा और आई वांट टू सेव इन द पर्टिकुलर द सिस्टम वेयर द ऑल द डाटा शुड बी प्राइवेट एंड यू हैव टू पुश अकॉर्डिंगली. और मैं नहीं रखना चाहता अपने सिस्टम में डाटा, ऑफ कोर्स दैट विच इज नॉट सेफली. ओके, तो मैं ट्राई करूंगा डॉकर हब और लाइक विच इज फ्री टू यूज एज अ बेसिक पर्पस. और कुछ प्राइवेट रजिस्ट्री भी होती है जो हम यूज नहीं करेंगे, दैट लाइक बेसिकली दे ओन देयर रजिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड देयर रिक्वायरमेंट एंड टीम साइज. ओके, सो बेसिकली बेसिक कमांड जो हमने हमेशा से देखते आए थे, जैसे गिट पुश, और जो भी आपको पुश करना है आप पुश कर सकते हो आप पर्टिकुलर इमेज नेम के अकॉर्डिंग, और जो भी आप इमेज बनाओगे उस बेसिस के अकॉर्डिंग. ओके, सो हम डायरेक्ट डॉकर अप के ऊपर चलते हैं. तो ये व्यू है इसका, आर्किटेक्चर है, दैट हाउ दिस वर्किंग्स. ओके, सो डॉकर अब आप टाइप करेंगे गूगल पे और सर्च करेंगे और जस्ट क्रिएट दैट अकाउंट. ओके, आई एम क्रिएट वंस माई अकाउंट. ओके, सो बेसिकली मुझे अपने क्रिएट रिपोजिटरी करनी है. सो वही बिल्कुल सिमिलरिटीज है सारी की सारी. तो मैं एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा डॉकर नोड. ओके, और मैं ये पब्लिकली रखूंगा और इसको डायरेक्टली क्रिएट कर दूंगा. ओके, तो बेसिकली ये एक तरीके से मान लो कि एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है पूरी की पूरी. तो यू हैव टू यूज दिस कमांड टू पुश ऑल ओवर द डेटा. सो अब ये कैसे करना है, अब आपको अपने कोड बेस में जाना है एंड उसके बाद आप चेक करोगे कि आप आपके पर्टिकुलर इस नाम की कोई इमेज बनी हुई है नहीं बनी हुई, क्योंकि यू हैव टू बी जस्ट सिमिलर टू दिस नेम, राइट. You have to use the username as well as like you have to use the image like that a particular repository name. Okay, like in this way. Okay, so yep. And docker images में check कर सकता हूँ. तो हाँ भी docker मेरा रन नहीं है बैकग्राउंड में. I have to start the docker. Okay, before that you have to log in that docker. Okay, docker login. Have to run this for the authentication. Okay, so now it's connecting, I think. I don't know. Please enter to your browser or submit your device code here. Okay. Okay, this is the device code. I have to submit this. Okay, now it's all things is set.
Maybe it's working fine. Yep. Hmm. Okay, so Docker login. I'll just check again. Yeah, distinct credentials. Yep. And now you have to check like you have a Docker images. Just check. I don't have any images. So just create the Docker build minus t at and if you want to give their name, you can just give their name. Also remember this command. This is the very new command. And okay, okay. So I take this name and host of other mine. Okay, Docker build process minus t dot. Okay, just build. It's take a time to for the building and it's build fast. Okay, well done. And image. See, this is the Docker image, and just write their command Docker push and their name, and it's taken time to push their code, like you mean to say the image, and it pushing. Okay, so this is how you can push your Docker image safely in a Docker hub, like the GitHub. Okay, take a time to push around 2 MBs. It's take a time because due to like your data is bigger, right? So uh, that's why, and the bandwidth of the network as well as right. So accordingly, this works. That you have to explore this if you want Docker Hub, because बहुत सारी functionalities है इसके अंदर, just like a name change and all. If you want to host with the Nginx, with the help of the Nginx, you can use that the Docker. There is a everywhere Docker and Hugging Face will set up the locals for the Hugging Faces models as well as